Mhm. Okay. Hmm. Hmm. Where are they based out? Acha. Okay. 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 Hmm. 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 Okay. Hmm. 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 Okay. 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 Hmm. Yes. Okay. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yes. That's it. Hmm.
Hello. Yeah, Sangeeta. Yeah. Yeah, okay. So the good news for today is that they are okay in principle to work with us. Okay. Okay. So they will send me the documents soon. They have FCRA also for foreign funding and all. Okay. And they receive foreign funding a lot actually from US and from United Nations and all. And also they work with Onergy, that solar energy company. Okay. Actually, they are the one who provided FCRA for Onergy. Onergy didn't have FCRA. Okay. They are the one who facilitated it. So they are okay. Okay, they have education projects. They have a lot of lands. Actually, they have the most land. It was so big. I think few years back there was a huge rally. Something meeting আছে তো কোথায় চলে গেছি আমি সবাইকে ট্রাই করতে কাউকে পাচ্ছিলাম ছেড়ে দাও আর কাউকে ট্রাই করতে হবে না আমাদের কথা হচ্ছে so Sangeeta, so what they told me that few years back the India government actually they actually obsoleted 8TG and 12A. So there is a new form called 10AC. Something right? The 10AB. 10AB or 10AC. I think they are going to share the document with me. I'll share with you. You check. That is the one they have. They don't have 8TG and all. Okay. They said it's not required. 8TG is no more relevant. So they submitted to ONGC. পাচ্ছিলাম না তো তোমাকে উনি বারবার ফোন করছেন আচ্ছা কথা বলে নাও Yeah, Sangeeta. So this 10 SC. They said this ONGC and ACL. Yeah, so they accepted it. 10AC, not 8TG. So, Sahasransu, like wherever we can apply, and still they're asking for 80G and 12A, like we need that document which has made this obsolete, right? So, we need some kind of link of this document which has made this 80G and 12A obsolete, right? So I'll show you the ONGC reply and ACL reply. Maybe I'll ask them to send me that email. That why 80G is not required, 10AC is not the new replacement. So I'm very surprised that this organization, this conservation project, they don't know about it. This is the development. No NGO are doing 80G now. Everyone is doing 10AC. Even Sadhan is applying for 80G and 12A, and they are struggling to get it. And the government is not going to give any. Yes. Okay. So I will share the new form. Okay. So with this we can. No, that date is over. So we can that was over on February 11th or so, no? Since then I had it. This is the. No, they cannot do like that. So so that is gone. So we will apply for some applies. There are so many projects. So We give this project to someone else. no. How the project happens, na? The project happens because they have
kind of circulated this thing, like the deadline is this. And by that time, whoever has applied, they will be considered or rejected, right? And once they are suppose they are taken into consideration, then all the documents will be checked. And if the documents are not adequate, then they will reject that proposal. That is what it stands as of now. So, so many times that lady followed up with me, saying, asking for these documents. So, whatever was with us, all the application and all, we have provided. So now the jury will decide whether they will give us or not give us, right? When means that process is going on. So if they give that, then so they have given it. But if they don't give, then also the deadline is over, and like the organization cannot be changed after the deadline. It is the process with all the project giving agencies. Whoever has a deadline means deadline. It is only with the CSR Ministry of Corporate Governance, the projects you can go on uploading. Somebody will see someday and they will give. And why these ATG and 12A are required is because they will then claim some tax. This no, that is why they are CSR. All the CSR projects come to that portal, and whoever. This organization, we can now, until we get we can start applying with their credential. So we can apply, but we have to get all the documents that they have, right? They have to. Yes. So they actually sent me before, and I have it in my email. But the recent one they will again send. And then they must have been registered with those this thing, no, this MCA. So we need to get not the documents now, but the this credentials also. I don't know whether they will be okay with that. So you need to speak to them, because this Sun King also knows what are the processes. So going to the project is a like a secondary thing. First, the credential will be theirs, and that credential, if they're okay to share with us. Otherwise, we can send the proposal, and they will be uploading it, and that is how it will be happening. So that process, the action, the process. Also, we need to be very clear about that. Like there is a certain amount of like dependence on them. So that dependence, how are we going to do that? That also you need to speak. Now, like what they have agreed to, I don't know. But yes, if some. Huh. See, which organization is registered, their organization is registered, right? So their organization is registered means we have to apply through them, which means what? Their credentials will be required, their ID and password. Correct. So if they are okay with that, if we can, so then we can open a new email ID. No, we cannot. We cannot. No, in their domain. अरे बाबा MCA like if you go to the corporate affairs, no, CSR वाला जहाँ पे registration होता है, if you see, we cannot. I'm talking about how you are applying to organizations like ONGC or some other departments. Then you don't need the MCA user ID password.
No, that one is different. Every portal has different function. So if ONGC will change it. That's not an issue. So we can start with a sample project and get all the documents, get it done, and hopefully by after 3-4 months we'll get the ATG or this thing. Okay. 10 AC. Okay. So Sanki, can you please check 10 AC? Okay, sir. I can just but TNAB the registration of ATG, not TNS, particularly not TNS. And I already Google 10 AC. Actually, this is 10 AC. I'll share in the group. I'll share in the group. 10 AC, it can be downloaded. But I'll go to the group and I shared. Okay, so 10 AC. Okay, you send it to our CA and ask him to do 10 AC. If you need a sample certificate, I'll send it. This organization will send. Okay. So that's a good thing. Now, what about the FPO thing? And FPO, we need ATG, Sangeeta? That NABARD document that we have, NABARD engage wala document, that we need to be prepared with all those documents. Once all those documents are at hand, then ATG is there. ATG should be there. So that documents ka list bahut. The difference, because in NABARD, even a for-profit private limited company can also be the facilitator, not only NGOs. So that means they don't have ATG. They cannot have ATG if they are not NGO. So ATG is one of the documents, Sahasransu. There are like say. So what we were proposing, if you have heard that discussion with Professor Kundu, it was like, and also there is so many discussion in the WhatsApp group also. The idea is to prepare the list of all the documents that we have, and the documents that we already have. In addition to that, there are certain other documents also are required. So if once those documents are done, then Professor Kundu will carry all those documents and talk to the DDM. Actually, the DDM will facilitate the. Just hear me out. Just hear me out, na. So the DDM will facilitate. If you can apply, then you can try a few. No. पहले मेरी बात तो सुन लो. मेरी बात पहले सुन लीजिए. So once Professor Kundu talks to the DDM will actually register us like Srijan Livelihood Development into their portal, NABARD Engage portal. एक बार register हो गए तो then the list of projects are available there. So then because the list of projects once we are registered will be visible to us, we can apply. किसी को भी ना बताए, right? So one time only we need to have बैठ के थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा. All the documents need to be prepared. वो पूरा लिस्ट देख के whatever documents we. I think I'm not getting it. Thing is that in NABARD, right, what I come to know that not only NGO, but even the private limited company can also be the facilitator. Not only NGO, like the commodity trading company, agri trading company. हाँ तो facilitator होने से क्या होगा? All the documents are required, Asransu, to speak to the DD. Private limited का ATG
एटीजी कैसे होता है? नहीं होता है ना। अरे एटीजी 12 को अगर छोड़ के आप कोई भी बात नहीं कर सकते क्या? आप देखो ना, वो पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करके समथिंग एक बार देखोगे आप। नाबार्ड एंगेज को मैं आपके पीछे पड़ गई, आप सुने नहीं तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, so I'm not talking about ATG 12A. ATG 12A is only relevant for NGOs, correct? उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है शास्त्रांशु। उसके बाद में जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट उस वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडीमेड नहीं है। कौन सा नहीं है? समथिंग कौन सा नहीं है? समथिंग तुम कल मुझे रिपोर्ट भेजोगे, उस लिस्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, कौन सा नहीं। ठीक है, जो नहीं है उसको बना लेंगे, लेकिन नाबार्ड के लिए एटीजी 12 के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अभी अभी मैंने नाबार्ड का ये प्रोजेक्ट अप्लाई किया है। उन्होंने ही एटीजी का पूछा और 12A का पूछा, दर्पण का पूछा। एवरीथिंग दे हैव रजिस्टर्ड। आपने बताया कि आप एनजीओ हो इसलिए। हाँ ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट। प्राइवेट लिमिटेड हमारे पास एक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बार-बार, क्योंकि ग्रामीण ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारे पास है, जो एग्री ट्रेडिंग उनके आरओसी में एग्री ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से है। ठीक है, लिस्टेड है। तो अगर आप तो फिर आप प्रोफेसर कुंडू ने फिर भी बोला था, प्रोफेसर कुंडू ने फिर भी बोला था ये डॉक्यूमेंट्स। यही सर 18 नहीं है, नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नाबार्ड में एक 12 एटीसी नहीं चाहिए, unless and until you are an NGO, then they will ask to prove that you are an NGO. बट हम एनजीओ के हिसाब से नहीं जा रहे हैं नाबार्ड के पास, हम कॉर्पोरेट के हिसाब से भी जा सकते हैं। उसके लिए हमारे बोलना चाहते हैं, हमारे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थ्रू अप्लाई कर सकते हैं सर। तो फिर आप वो प्रोफेसर कुंडू को बोल दीजिए कि हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। सर, आप प्रपोजल लिखिए और आप डीडीएम के पास जाइए। प्रोफेसर कुंडू, इसका ही काम है, ये हमारा पैरेलल कंपनी है जो इस रीजन में है। तो प्रोफेसर कुंडू जब पूछ रहे हैं तो फिर आपको रिप्लाई उसी तरह से करना चाहिए ना। वो तो 4 बार पूछ चुके ग्रुप में। नहीं, उनको पता है, he knows about the company also. He knows about the company. He wants the documents, शास्त्रांशु। वो डॉक्यूमेंट्स 4 बार पूछ लिया। कल ही भेज दो, समथिंग क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स है इसमें, भेज दो कल। जो नहीं है उसको फ्लैग करो, उसको बना लो, फिर भेज दो। ठीक है, उसको निपटाओ ऐसे, ठीक है, उसे इसको निपटाओ। हाँ, तुम सर से बात करके सैटरडे के अंदर इसको कंप्लीट करो। ठीक है, ये तुमको मैं टास्क देता हूँ। ओके, तो नाबार्ड का हो गया। और दूसरे जो ग्रैंड प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारा पार्टनर एनजीओ भी रेडी हो गया। अभी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो संगीता आप बताइए, हम उसके टीजी के थ्रू अप्लाई कर देंगे, उसके 10AC के थ्रू अप्लाई कर देंगे। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे वो सीएसआर में है, कहाँ पे है और जितने सारे आपने बताया था ना, जितने सारे वेबसाइट, वो किसी वो सारे वेबसाइट में जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी कैसे अप्लाई करना है देखेंगे। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट है तो इस ग्रुप में डाल देना। ओके सर, सीएसआर में जाके ये जो एमसीए का सीएसआर है ना, एमसीए का जो सीएसआर पोर्टल है वहां पे जाके देख लो, अगर वेस्ट बंगाल में अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको डाल दो। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट वहां पे दिखता नहीं। करके ग्रुप पर डाल दो। प्रोजेक्ट वहां पे नहीं दिखता सहबल, शास्त्रांशु। वहां पे प्रोजेक्ट नहीं दिखता। आप प्रोजेक्ट अपने से डाल सकते हो जब आपके पास CSR 1 है, ATG 12 है, तो आप रजिस्टर कर लेते हो ना। तो वहां पे आप अपने मन से डाल दो, वहां पे कोई लिस्ट आउट लिस्टेड प्रोजेक्ट है। हाँ, CSR 1 का अप्लाई किया है। आपने कर दिया तो कर दिया, बहुत पहले कर दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट नाम को मैं कर दिया था। एक्नॉलेजमेंट से क्या होगा, तो जरूर आए ना एग्जाम। हाँ, वो उसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है। वो सर्टिफिकेट अगर हो जाए तो फिर वहां पे जाके कोई भी प्रपोजल हम डाल सकते हैं।
वो उसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब आएगा, बट हम डाल तो सकते हैं। ठीक है, तो ये करो। और क्या क्या प्रोजेक्ट एक बार गूगल में सर्च करके देख लो, क्या क्या वेस्ट बंगाल में क्या ओपन प्रोजेक्ट्स क्या है, और कोई फाउंडेशन में कोई डाला है कि नहीं, आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो वो तुम मुझे कल पूछ लेना कैसा सर्च करना है ये गूगल पे, ठीक है। ओपन आरएफपी जो है, जैसे होता है ओएनजीसी से होता है, इंडियन ऑयल से होता है, कोल इंडिया, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हेड ऑफिस है इंडिया का। कोल इंडिया का बहुत सारे सीएसआर प्रोजेक्ट्स होते हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कोल बेल्ट है, ठीक है। वो देख लेना एक बार, ठीक है। संगीता, वन मोर थिंग, ये जो आपका जो टीएससी वाला क्लियर हो गया ना वहां से बेसिक से, सर की तो इसमें इसको आप अभी क्लियर हो गया है, आप इसको प्रोसेस करा लो, ठीक है। हाँ ठीक है सर, मैडम आइटम दिए थे पहले, ये क्लियर हो गया। तो हाँ, तो आप इसको डाल दो और इसको फिर तो हाँ 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन में इसको प्रोसेस करो। और चेयरपर्सन के हिसाब से कोई अगर आ, ये है बोर्ड रेजोल्यूशन है तो उसको भी क्लियर प्रिपेयर करो एज ए चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। ओके, और हमारा एक नया एक ऑनबोर्डिंग होगी यूरोप से, मैं जो लास्ट मीटिंग में बता रहा था, मैं आज ही इस कॉल के बाद ही मैं उनको कॉल करूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके बाय।